Weight of solute given है 60.26 gram. The solute is VCl₄. Weight of solvent is 1000 gram. The solvent is CCl₄. Depression in freezing point of CCl₄ is 5.415 degrees centigrade. Kf for CCl₄ is 29.9. Now compare the number of moles of particles with the number predicted by the formula. Calculate the number of dimers V₂Cl₄ present. Now VCl₄ associates to form dimers, means two molecules of VCl₄ will form one molecule of V₂Cl₄. तो इनिशियली अगर 1 मोल ऑफ VCl₄ प्रेजेंट था तो बिफोर एसोसिएशन मोल्स ऑफ V₂Cl₄ था 0. अब आउट ऑफ 1 मोल x मोल्स ऑफ VCl₄ एसोसिएट कर गया to form x by 2 moles of V₂Cl₄. So after some time moles of VCl₄ remaining is 1 minus x moles and moles of V₂Cl₄ formed is x by 2 moles. So total number of moles हो गया remaining moles of VCl₄ that is 1 minus x, moles of V₂Cl₄ formed that is x by 2. So 1 minus x plus x by 2 is equal to 1 minus x by 2. ये हो गया टोटल नंबर ऑफ मोल्स. अब I की वैल्यू होती है नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स बिफोर एसोसिएशन. तो नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन है 1 माइनस एक्स बाई 2 एंड नंबर ऑफ मोल्स बिफोर एसोसिएशन था 1 मोल. नाउ डेल्टा TF that is depression in freezing point is equal to I into KF into M. Here M is the molality. Now delta TF की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, KF की वैल्यू गिवन है, मोलालिटी की वैल्यू वी कैन फाइंड आउट. मोलालिटी की वैल्यू हो जाएगी मोल्स ऑफ सल्यूट दैट इज मोल्स ऑफ VCl₄, उसका फॉर्मूला होगा वेट ऑफ सल्यूट दैट इज 60.26 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्यूट दैट इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ VCl₄ and it is 193 gram per mole divided by mass of solvent in kgs. तो mass of solvent है 1000 ग्राम, इसको kgs में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 kg. सो मोलालिटी हो गई सोल्यूशन की 0.312 मोल्स पर kg ऑफ सॉल्वेंट. नाउ I की वैल्यू हो जाएगी डेल्टा TF डिवाइडेड बाय KF into M. नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ डेल्टा TF, KF and M, the value of I is 0.58. This will be 193 into 1. Now the value of I is equal to 1 minus x by 2 divided by 1. Let this be equation 1. And the value of I is also equal to 0.58. Let this be equation 2. From equation 1 and equation 2, 1 minus x by 2 divided by 1 is equal to 0.58. Solving x की value आ जाएगी 0.84. When the initial concentration of VCl₄ is 1 mole, then amount of VCl₄ remaining is 1 minus x moles. और जब initial number of moles of VCl₄ है 0.312 moles, moles of VCl₄ हो जाएगा 60.26 divided by 193 and this is equal to 0.312 moles. So when initial number of moles of VCl₄ is 0.312 moles, then the VCl₄ remaining is 0.312 into 1 minus x moles. So 0.312 into 1 minus x, 1 minus x मतलब हो गया 1 minus 0.84 that is 0.16. So putting the values and solving, VCl₄ remaining is 0.049 moles. Now जब 1 mole of VCl₄ associate किया तो moles of V₂Cl₄ formed is x by 2 moles. And when the initial number of moles of VCl₄ is 0.312, then moles of V₂Cl₄ formed is 0.312
into x by 2 moles. This is equal to 0.312 into 0.42. अब x की वैल्यू है 0.84, सो x by 2 की वैल्यू हो जाएगी 0.42. सॉल्विंग मोल्स ऑफ V2Cl₄ की वैल्यू हो गई 0.131 मोल्स.